मैं आपके लिए दोबारा लेकर आया हूँ सेट 2 में अगले 25 क्वेश्चन का एक सेट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके बड़े काम के हैं, आपको करना ही है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप? वी नो दैट मैग्निफिकेशंस is beta by alpha. These are the angles terms, and you know that they have no dimension, so this is dimensionless. Unit of magnification is dimensionless. Now number of free electrons Ne are more in which type? यानी इलेक्ट्रॉन्स कैरियर किस एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपको पता है दो तरह के होते हैं, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल? डू यू नो वेबर इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड आल्सो Maxwell is also unit of magnetic flux. It's a SI system. In SI system, unit is Weber, and in CJ system, unit of magnetic flux is Maxwell. Relation between 1 Weber is equal to 10 की 8 Maxwell. Because you know that magnetic flux is BA, unit of B Tesla, and its unit is meter square. 1 Tesla in CGS 10 की 4 Gauss, or 1 meter square is equal to 10 की 4 centimeter square. That is 1 Weber is 10 की power 8 Maxwell. What is the relationship between coulomb and abcoulomb? 1 coulomb is equal to 1 by 10 abcoulomb. Now next term, define the term stopping potential or cutoff potential in relation to photoelectric effect. That is, minimum negative potential given to anode in photoelectric cell for which photoelectric current becomes 0 is called stopping potential or cutoff potential. And you know that आपने पढ़ा है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंदर आपका ये कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या होती है जब आपकी अगर मान लो V नोट क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल है, दिस इज द इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी। नाउ नेक्स्ट, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। This is defined as the point at which total kinetic energy of alpha particle converted into potential energy. As you know that in another force scattering experiment, this is nucleus when this alpha particle approaches with kinetic energy half mv square. At a point, let it be, the distance is known as distance of closest approach. At this point, this kinetic energy totally converted into potential energy. And the relation, if you equalize this, R naught will be half 1 by 4 pi epsilon naught ZE 2E half mv square. Here ZE is the charge on nucleus, this is charge on alpha particle, this is the kinetic energy. That is the point at which total kinetic energy converted into potential energy, known as distance of closest approach. Next is define impact parameter. What is impact parameter? Is the perpendicular distance of velocity vector of alpha particle from the center line of nucleus when particle is far away from the atom. In other force scattering experiment, this is nucleus, this is the center line of alpha particle. Let this distance represented by B, known as impact parameter. Value of B determine whether alpha particle
scattered, more rebound. If B, that is value of B is 0, the alpha particle will be rebound. Value of B if increasing, that is the angle of scattering increasing. Now the value of B 1 by 4 pi epsilon naught Z E square cot theta by 2 E is kinetic energy. At what temperature would an intrinsic semiconductor behave like a perfect insulator? At absolute 0 Kelvin, intrinsic semiconductor behave like a insulator. Number of free electron NH will be in more. आपको पता है होल किसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं? P टाइप सेमीकंडक्टर. Now, which dopant can be used to make germanium and N-type semiconductor? मैंने आपको बताया था, अगर मान लो आपको 14 ग्रुप एलिमेंट जो आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर है, वे 13 ग्रुप एलिमेंट इसके अंदर डोप करेंगे, जैसे बाल, गंगा, इंडिया, तिलक. याद करने के तरीका है आपका 13 ग्रुप वाले अगर आप इसके अंदर ऐड करते हैं एज ए डोपेंट तो आपका बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर. अगर आप 15 ग्रुप एलिमेंट लेते हैं, नाना पापा आंटीज सब बीमार, यानी ये जो एलिमेंट है 15 ग्रुप के, अगर इनको ऐड करते हैं 14 ग्रुप के साथ तो आपका बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो क्वेश्चन इज विच डोपेंट कैन बी यूज्ड, which dopant cannot be used to make germanium and N-type semiconductor, यानी हमें N-type नहीं बनाना है. तो ये जितने भी आपके हैं, ये इधर वाले जो आपकी है 13 ग्रुप एलिमेंट, 13 ग्रुप एलिमेंट अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या है? N-type सेमीकंडक्टर नहीं मिलेगा, P-type सेमीकंडक्टर मिलेगा. The relation between average value of AC and root mean square value of AC. आपको पता है जो आपकी RMS वैल्यू होती है ये होती I नॉट बटे में रूट 2 होती है, और जो आपकी एवरेज यानी मील वैल्यू ऑफ करंट होती है ये होती 2I नॉट बटे पाई होती है. और दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों के बीच में रिलेशन जो निकल के आएगा ये आपका क्या आएगा? 2√2 पाई IRMS. That is our answer. Now, a relation among current density, electric field and conductivity. You know that this is current density, this is the conductivity and this is the electric field. This is the relation between the current density, conductivity and electric field. Now, next question. What is the unit of refractive index? We know that refractive index Snella sin I by sin R. Also you know velocity in one medium, velocity in second medium, that is the same quantity. So it's a dimensionless. Unit of refractive index dimensionless, कोई यूनिट नहीं होती इसकी जो है. What is depletion region इन P-N टाइप जंक्शन? मैंने आपको बताया था जब P टाइप सेमीकंडक्टर को N टाइप सेमीकंडक्टर के पास लेकर आते हैं तो रिजल्टेंट जो फॉर्म होता है P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे एक फिक्टियस बैटरी बन जाती है, बैटरी जिसका नेगेटिव एंड हम मानते हैं कि P रीजन में है और पॉजिटिव एंड कहाँ है? आपका N रीजन में है. तो कुछ इस टाइप की बैटरी बन जाती है आपकी. इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर. इट इज़ ए लेयर क्रिएटेड अराउंड द जंक्शन विच इज़ डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर एंड हैज़ immobile ions. Now next, for a given photosensitive materials and with a source of constant frequency of incident radiation, how does the photocurrent vary with intensity of incident light?
आंसर इज value of photoelectric current increases with increasing intensity of light because number of photon falling per second on material increases. ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो बढ़ जाता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीलियम एटम एंड अल्फा पार्टिकल्स? आपको पता है हीलियम क्या है आपका, यानी इनर्ट गैस है जिसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. लेकिन जो अल्फा पार्टिकल होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो होते हैं लेकिन क्या है इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. तो एज ए क्या है ये न्यूक्लियस बिहेव करता है. तो हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. A radioactive sample related to its half life and the mean life is, ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री के अंदर भी है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो है, और न्यूक्लियाई के अंदर भी है. कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है फिर भी देखिए टी जो आपका है हाफ लाइफ पीरियड जो होता है आपका, इसकी वैल्यू कितनी होती है 693 बाई लैम्डा, एंड लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या इसको डीके कांस्टेंट भी बोलते हैं. जो आपका मीन लाइफ होता है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. जो रिलेशन निकालेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी आपका 1.44 टी हाफ, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव. क्वेश्चन 18 क्वेश्चन इज the equation which govern charging of capacitor through resistor R is, it is the this is the equations. Next question is the equation which governs discharging of capacitor through resistor R is, twentieth question is dash have largest penetrating power among alpha, beta, gamma rays. Gamma rays have largest penetrating power. Next question 21 dash doesn't show its particle nature. Interference or diffractions doesn't show its particle nature. Photoelectric effect shows particle nature. What happened if electrons in an atom were stationary? You know, if an electrons in an atom become stationary, then due to electrostatic force of attraction between nucleus and outermost electrons, electrons will fall down into nucleus and atom collapsed. So stability of atom is destroyed. What is wave number? Reciprocal of wavelength is called wave number. It is represented by 1 by lambda, and we know that from the origin of hydrogen spectra the relation n1 and n2 are orbits and r is known as Rydberg constant. काफ़ी बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है. इसकी वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷ per meter. What is AC generator or AC dynamo? A machine which converts mechanical energy into electrical energy is called AC generator. A machine जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है उसको बोलते हैं AC generator. On which factor mutual inductance depends? Mutual inductance M. It depends upon geometry. Second, distance between the coil. Third, relative orientation of two coils. That is, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड किस पे करता है, किस तरह से आपकी जो कोइल्स है उनकी ज्योमेट्री कैसी है, डिस्टेंस कैसा है, उनकी रिलेटिव ओरिएंटेशन कैसी है. तो ये थे आपके आज के लिए 25 क्वेश्चन सेट 2. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके करेंगे.